हेलो एवरीवन, आज का जो ईडियम है वो आप स्पीकिंग टॉपिक में भी यूज़ कर सकते हो, राइटिंग ऐसे में भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर क्वेश्चन है डिस्क्राइब अ मोटिवेशनल पर्सन, अ पर्सन हु इंस्पायर्स यू और द स्ट्रेंजर हु इम्प्रेस्ड यू। सो उस टाइप के क्वेश्चन के अंदर आप ये ईडियम यूज़ कर सकते हो। और अगर ऐसे क्वेश्चन है तो ऐसे क्वेश्चन में भी nowadays we can see that lots of people are being carefree or living a life which is giving them more freedom to enjoy. तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन के अंदर आप ये ईडियम यूज़ कर सकते हो. नाउ लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड द ईडियम एंड इट्स मीनिंग. Hello everyone. In today's video I am going to explain one idiom which is as free as a bird. It means in English a person who is very carefree, who is living his life on his own conditions, who is enjoying his own freedom. ગુજરાતીમાં કહા જાય તો એવો વ્યક્તિ કે જે પોતાની સ્વતંત્રતાને એન્જોય કરતો હોય, જે પક્ષીની જેમ મુક્ત જીવન જીવવા માંગતો હોય. इन हिंदी इट मीन्स जो इंसान पक्षी की तरह अपनी स्वतंत्रता को एंजॉय करना चाहता है उसके लिए ये इडियम यूज़ किया जा सकता है. नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल. वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज एवरीवन हैज़ ड्रीम टू लिव एज फ्री एज बर्ड but family responsibility are not allowing us. Again I repeat, everyone has dreamed to live as free as a bird but family responsibility are not allowing us. Second example is after finally facing her fears, she is now as free as a bird. Again I repeat, after finally facing her fears, she is as free as a bird. So if you like my videos, then please share, like and comment. Your comments motivates me to make more videos. Thank you for watching.